जय गुरु जी दे चरनां च मत्था टेकदी हां एंड गुरु जी दी सारी प्यारी संगत नूं जय गुरु जी। नकुल, दैट वाज सो ब्यूटीफुल व्हाट यू जस्ट sang कि प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाएं, एंड दैट इज सो ट्रू कि गुरु जी हमारे साथ हैं ऑल द टाइम एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम every mishap, every bad happening. So शुक्राना गुरु जी, always लख लख शुक्राना। एंड ये जो आज निंदा की बात हो रही थी, वो तो हो ही जाती है, बट यस, वन इज ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम दैट, ऑलवेज रिमेम्बरिंग के हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं उसमें भी गुरुजी हैं, बिकॉज गुरुजी तो हर जगह है, हर एक चीज में है, कण कण में है। तो कुछ वक्त पहले ये 4 लाइनें लिखी थी, which helped me to keep away from निंदा and चुगली to a great extent. So it is के बोझ अपने मन पर इन लहजों का क्यों डालता है। लहजा इज नॉर्मली क्या होता है, कि वो उसने मेरे साथ ऐसे बात कर दी और ऐसे क्यों बोला और वैसे क्यों बोला, है ना। तो बोझ अपने मन पर इन लहजों का क्यों डालता है, बस तू याद रख इतना कि हर दिल में खुदा रहता है। बस तू याद रख इतना कि हर दिल में गुरुजी रहते हैं। तो जब हम ये याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आई थिंक दैट विल help us steer clear of doing ninda and chugli, and recognizing and realizing कि गुरुजी की blessings तो limitless हैं, unlimited. Guruji's love is unconditional, and we are so fortunate to be in Guruji's sharan and experience that unconditional love जो गुरुजी हर वक्त बरसाते रहते हैं। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग वन डे, मैं ख्याल गुरुजी थोड़े से कितना प्यार है, गुरुजी जस्ट लव्स एवरीबॉडी, आई मीन ऑल द संगत, एवरीवन। एंड if I can incorporate even just a little bit of that into my life, how beautiful every relationship would be and how meaningful every relationship would be. So अरदास है गुरु जी के चरणों में कि प्लीज ऐसी मेहर बख्शें कि हम सब वो अनकंडीशनल लव अपने दिल में महसूस कर सकें और हम उसी नजर से सबको देख सकें। And today I want to share this satsang. Actually, when I got to know that I have to share, तो मेरा वही होता है कि what will I share, मैं क्या शेयर करूंगी। तो खैर गुरुजी ने ये याद कराया कि in 2019 my brother who's in the US was very unwell, and he had to be admitted to the hospital. And of course the first thought that came into my mind was कि गुरुजी हैं, है ना, and Guruji is going to take care of him and of all of us. तो not कुदरती, actually it was Guruji's plan कि जिस रूम में वो थे तो उसका रूम नंबर 7 था, and that immediately put all my thoughts, fears, apprehensions, anxieties, everything at rest. कि गुरुजी ने वहीं बता दिया कि नहीं, मैं हाँ हूँ, you don't need to worry, nobody needs to worry. बस गुरुजी को याद रखना है, गुरुजी का जाप करना है, और one has to carry on. And फिर उसी time, of course the danger was over, but I had to travel to the US in 2019, and when I reached, he was of course recovering, definitely, but there was a clot in his heart, and the doctors, of course, they were not positive about it, because they said that
we don't know how long it will take for it to dissolve. And if it dislodges, it can create a lot of hassles. So मैं वहाँ पहुंची, and what I started doing with Guruji's meher is that I started doing the mantra jap. And whenever, I would be massaging my brother's feet, which would be every night, तो मैं साथ साथ मंत्र जाप करती थी. And in the morning or at any time in the day, I would do mantra jap and make jal prasad. और वो जल प्रसाद I would give it to him, है ना? And within, I think it was a month later, we went for the X-ray to just see the situation of the clot. And Sangatji, the doctor was amazed because the clot was not there. And it is only and only Guruji's grace that the clot was not there. And he was like, he says, this is a miracle, it's magical, and this and that. And I was thinking to myself, I said, no, this is Guruji's grace and Guruji's abundant blessings that the clot is not there. And again, only with, divine blessings of Guruji, we could do Satsang of Shukrana over there, because my brother and his family, they have a different path towards spirituality, which is real for them, which is fine. But, with Guruji's grace, we could do a Shukrana Satsang. And again, thank you to only Guruji. And after that, because till that time, till 1 month, I did not think of going, or rather, there was no indication from Guruji for me to attend any satsang over there. So jab ek mahina ho gaya, and this was around Baisakhi. So I was looking at Guruji's Swaroop, and I said, Guruji, I want to attend a satsang. And, Guruji made me connect with the group over there, Guruji Sangat over there. And such beautiful connections, it was not like I was talking to them or communicating with them for the first time. It was like, we were just talking after a gap of some time. Though actually, it was the first time, but aisa lag nahi raha tha. They were just like old soul connections, And I still remember when the first auntie I connected with, and I was talking to her, and bahar window ke, there were so many butterflies, yellow ones and so many different colors. And I was just doing Shukrana to Guruji. Main kya ki waah ji waah Guruji. And the first satsang I could attend over there was for Baisakhi. And, मेरे को होता था कि I also want to dance for Guruji, in front of Guruji. And उस बैसाखी वाले दिन Guruji ने वो भी bless किया that I could dance over there. And उसके बाद फिर with Guruji's grace, I could attend a satsang almost every week. And, it's all Guruji's beautiful divine plan, which is so perfect. And it is perfect when, we don't put in our limited thoughts to it, our ifs and buts. When we don't do that, then the road is just beautiful. It's clear. There are no obstructions. It is only when we start thinking and, putting in our, I would call it kachra, because वो कचरा ही होता है, अगर हम बस चुपचाप गुरुजी का जाप करते जाएं, गुरुजी का ध्यान करते जाएं और चलते जाएं,
I think it is really beautiful. तो वहाँ पे where I was placed, it was in the heart of the city, and satsangs दूर दूर होते थे, about an hour's run, 1.5 sometimes. तो वहाँ पे एक संगत आंटी who I connected with, she's so dear to me, and she would really encourage me, you know, to bus में जा, to train में जा, and she would send me the train schedules and the bus schedules के, you know, you go, you take it, कुछ नहीं होता. And actually I ventured out, and I would reach जहाँ जैसे सत्संग 11 बजे, I would have to leave home at about 8 to reach the satsang place, you know, in 3 hours. But वो भी सिर्फ गुरुजी की मेहर से, otherwise it wouldn't have been possible. कि मुझे वो हिम्मत भी दी कि, you know, I would venture out and find out the train कौन सी है, कहाँ से जाना है, क्या है. And my brother would help me. He would say कि चल, you know, हम एक दिन पहले जाके देख आते हैं, how will you go and all. So it's all Guruji's plan. And I'm so thankful कि गुरुजी ने अपनी शरण में लिया हुआ है, and you know, he blesses always, all the time. हाँ, ये जरूर होता है कि कई बारी अपनी ही बुद्धि लगाने के चक्कर में वो कभी कभी you know, blessings दिखाई नहीं देती हैं, but गुरुजी की मेहर तो is just there, it's abundant, you know, it's limitless. कोई उसका अंत ही नहीं है. So that happened, and Guruji keeps blessing my brother with his health. बीच में कभी-कभी, you know, down हो जाता है, but फिर भी गुरुजी ने बनाई हुई है उनकी health, and शुक्राना to Guruji. अभी भी, you know, there were some medicines that I had to send to him, and this auntie was going to the US, and उसमें there were 3 bottles जिसमें liquid था. तो वो मुझे कहती हैं कि, you know, मैं ले तो जाऊंगी, but what if they stop me at the customs and this and that and the other. So गुरुजी कहते हैं कि I mean I'm telling aunty, मैंने कहा aunty देखो, अगर तो ये नहीं जानी हुई ना, that means उसको जरूरत नहीं है और ये जाएंगी नहीं. और अगर ये जानी है और चली जाती है, that means he requires them, and they will reach him. It is you know, that simple, that it is all up to Guruji. If they have to reach him, they will anyhow, and if they are not meant for him, they will not reach him. And sure enough, वो पहुंच गई वहां पे. So शुक्राना to Guruji. You know, there is, I mean, all the time one can just be in Shukrana, because every moment is a beautiful satsang. You know, that we are breathing, that we are alive, with so much happening around us and, you know, in the world. कि गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने हमें रखा हुआ है. If I look at myself, you know, the whole of last year has been so challenging health-wise. I had COVID, I had herpes, I had dengue, I was hospitalized, I had a back issue, a slip disc, but I'm fine, you know, and it is all Guruji's grace, nothing else, absolutely nothing else. कि गुरुजी, you know, वो दवाइयाँ भी वो सामने आ जाती हैं, वो supplements भी जो लेने, everything just comes right in front of you, provided, you know, we keep our minds clear of chatter and disturbances. और वो कर्म हमें ही करना है. You know, like I always say कि गुरुजी ने तो हमारा हाथ बड़ा कस के पकड़ा हुआ है, you know, पर I think कहीं ना कहीं वो हम ही है जो छुड़ाते फिरते हैं. We get kind of distracted in the world and you know, उलझनों में फंस जाते हैं. Otherwise, the route with Guruji, I think it's very, very clear, clear of uljhans and
anything else. So शुक्राना है गुरु जी का कि हमारा हाथ पकड़ा हुआ है. And just a couple of days back, I was a little low, very low. And कुछ भी जब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है, kind. So what happened is I was sitting and suddenly there was this message from one Sangat auntie who has met Guruji, spent a lot of time with him and beautifully connected. And आगे पीछे बहुत अरसे से कोई उनके साथ communication नहीं था. And she sends me a playlist and she says कि ये गुरुजी के मुख से निकले हुए शब्द which Guruji has instructed, and she sends me that playlist. And I was like, Shukrana Guruji, कि Guruji does not let you feel low. वो कहीं ना कहीं से, ऐसा connection बना देते हैं, ऐसा reason बना देते हैं that you have to bounce back. There is no other way. And you have to again recognize that Guruji is listening to you all the time. Guruji is with you all the time. That's 24/7. And 24/7 Guruji ki grace hai hum pe. And Shukrana Guruji for that. And that same day, another Sangat auntie who again, जैसे हम पुरानी संगत कहते हैं, तो उसी दिन उसी टाइम उनका भी एक मैसेज आ गया और वो भी एक ऐसा ही सूफी गाना था which the words were so beautiful and it just said that you just get up, you forget thinking about all the problems of the world and all, and just get up and enjoy and live in his grace. So Shukrana hai Guruji ka to keep bringing me back on the track anytime that I tend to go astray. जो ज़्यादातर होता नहीं है, but फिर भी. So Shukrana to Guruji. And I'd like to share this satsang which happened abhi. Since some time, because of my health, my husband kept telling me that why don't you, keep a cook? And I would keep saying no because I like to cook and I really enjoy cooking. And मैं अपनी शब्द लगा के and I cook. But अब क्या हो रहा था कि because of the health, I was unable to stand for too long in the kitchen. तो करा के मैंने कहा कि नहीं, okay, I won't get a cook, but let me just get someone, who can just massage my feet so that I'm easy that way. तो ऐसा हमने सोचा and मैंने बुलवाया किसी को and उसका बन ही नहीं रहा था, मैं आ जाती हूँ कल आती हूँ. So finally, अच्छा मैं सोचती थी कि no, let me just let her go, पर वो होता नहीं था. Again I would call her. Finally she came and हमारी बात हो गई तो ठीक है. She says मैं कल आऊंगी. I said ठीक है. And she gave me her number and when I was going to save it, in front of her name it said cook, Sharda cook. So I immediately called her. I said, आप खाना भी बनाती हैं? She says, हाँ. तो I said, बस ठीक है, फिर आप खाना बनाने आना. And she started coming. कुछ दिन पहले की बात है, early this month. And she started coming and a very nice person, बड़ा अपनापन. And बात करते a couple of days back, she was telling me she doesn't have a husband and her daughter has to get married, and she was just saying कि ये तकलीफ वो तकलीफ. And I pointed out and I brought her to Guruji's Swaroop and I said कि देखो ये ना गुरुजी हैं, है ना, तो तुम अपने आप को अकेला मत समझना और गुरुजी है तो जो भी है तुम गुरुजी को बोल दो, है ना. And she looks like she says, अरे ये ही जो
यही शी कॉल्ड इट फोटो, शी सेड यही जो फोटो है ना, ये मैं एक और जगह जाती हूँ वहां पे भी है। तो मेरे तो एकदम कान खड़े हो गए। आई सेड अच्छा, आई सेड कौन है? एंड ये शी सेड वो भी गुरुजी की बातें करती रहती हैं और वो शब्द लगाती हैं। आई सेड अच्छा। शी सेड जब मैं जाऊंगी ना उनके वहां तो मैं आपकी बात कराऊंगी। तो आई सेड ठीक है। 5-10 मिनट में बैठी रही, फिर मैंने कहा नहीं, आप है ना मेरे को उनका नंबर अभी दे दो। तो एंड आई टुक हर नंबर एंड I called her up and it was so beautiful because she has met Guruji. And very to खुशी, when I was listening to her, I had all goosebumps, you know. And फिर हम घंटा भर सत्संग करते रहे. And the good part is she lives very close to my house. I didn't know. तो मतलब गुरुजी कैसे कैसे कनेक्शंस बना देते हैं, यू नो, इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड वी कनेक्टेड एंड वी स्पोक फॉर सो लॉन्ग. सत्संग भी शेयर हो गया. एंड देन आई सेड अच्छा, दैट इज व्हाई, यू नो, ऐसे हो रहा था कि आई कुडंट लेट गो ऑफ दिस लेडी बिकॉज शी हैड टू, यू नो, गुरुजी बाय हर made me connect with this other sangat. So शुक्राना है गुरु जी का, you know, always शुक्राना है गुरु जी का. And you know, there was something जो मैं लिख रही थी एंड वो ना एक लाइन पे अटका हुआ था, उसके आगे वो पूरा ही नहीं हो रहा था. And today when you know satsang sharing का हुआ, तो I was just looking at it. I said अच्छा ये लिखा हुआ है. एंड उसकी जो वो एक मिसिंग लाइन थी वो भी पूरी हो गई. तो मैं अभी वो सुना देती हूँ. दिस इज द मोस्ट रीसेंट जो गुरुजी ने लिखवाया है. सो आई विल शेयर दैट. जय गुरु जी. डुगरी वालिया हो, डुगरी वालिया, डुगरी वालिया हो, डुगरी वालिया, डुगरी वालिया तुम पा दे मेरी चोली विच खैर. डुगरी वालिया, डुगरी वालिया तुम पा दे मेरी चोली विच खैर. डुगरी वालिया दर है तेरा रहमत वाला, होवे ना निराश कोई. दर है तेरा रहमत वाला, होवे ना निराश कोई. एक बारी मत्था जो टेके, रवे ना मायूसी कोई. डुगरी वालिया ओ, डुगरी वालिया, डुगरी वालिया तुम पा दे मेरी चोली विच खैर. डुगरी वालिया बख्श दे गुनाह मेरे, सीधे रास्ते पा दे तू. बख्श दे गुनाह मेरे, सीधे रास्ते पा दे तू. नाम तेरा जप दी जावा, मेहर कर दे ऐसी तू. नाम तेरा जप दी जावा, मेहर कर दे ऐसी तू. डुगरी वालिया ओ, डुगरी वालिया, डुगरी वालिया तू पा दे मेरी चोली विच खैर. डुगरी वालिया, डुगरी वालिया ओ, डुगरी वालिया. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. तो ये जो था
ये गाना एक लाइन की वजह से अटका हुआ था, तो गुरुजी ने वो भी आज पूरा करवा दिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम, ऑलवेज शुक्राना। तो रूपा, हाँ, हेलो, जय गुरुजी। यस, सो आई विल और एक गा लो। Okay. It is 7 minutes Okay. to 11. Huh? It is 7 minutes to 11. 7 minutes to 11. Okay. I am just looking for something to sing. गुरु जी की मेहर से जो गुरु जी चाहते हैं वो ही गाऊंगी। Okay. It's something गुरु जी ने लास्ट ईयर मई में लिखवाया था, जब Corona was at its peak and I was stuck in the US. So I will sing this. तू चिंता काती करदा है, just give me a second. चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। तू डोलदा फिरदा है वे क्यों, तू डोलदा फिरदा है वे क्यों, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। तू चिंता कादी, तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। तू फिक्र है कल दी क्यों करदा, तू फिक्र है कल दी क्यों करदा, तेरा गुरु सवारे कम बंदिया। तू चिंता कादी, तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। तू सिमरन हर वेले दा कर, तू सिमरन हर वेले दा कर, गुरु दी रज़ा विच सदा रह बंदिया। तू चिंता कादी, तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। ना फूल तू पिछले वक्तां नूं, ना फूल तू पिछले वक्तां नूं, बस अज दा कर्म तू कर बंदिया। तू चिंता कादी, तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। अरदास तू कर एक मन होके, अरदास तू कर एक मन होके, तेरा गुरु है सच्चे दी सुनदा। तू चिंता कादी, तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। तू चिंता कादी करदा है, तेरा गुरु ने फड़िया हथ बंदिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले शुक्राना। सारिਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਐਂਡ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ, ਸਭ ਦੀ ਰੂਹ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ for listening to my satsang. ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
शुक्राना टू गुरुजी। तेरे को पता है रूपा, मैं तो लिखती नहीं हूँ, गुरुजी जो लिखवा देते हैं। आई जस्ट आई जस्ट यूज द पेन एंड पेपर एंड आई राइट इट, एंड बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का। एंड यू नो, लेट अस ऑलवेज इमर्स आवरसेल्व्स in Guruji's divine love, and feel his protective care always. So it's like really important to stay connected, to stay focused, stay centered and grounded in Guruji's bliss. It's the most beautiful space to be in.